Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jamuna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. What is the Bhagavatam? Here? Here, maybe. Huh? Oh. you should have recorded and put in tape. Okay, some, but not all. Up to what time? 9:30? Oh my God. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam nastaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati ruttamaśloke bhakti bhavati naistiki. Okay. Time for bread. Class finished. Sari Ram Jajal. Hare Krishna. Sorry. Okay. So, salva kara kritam manne bhavantam chayat apriyam sapalo yad vashe loko vayor eva ganavalihi. Bhishmadev is speaking. भीष्मदेव कह रहे हैं, In my opinion, मेरे हिसाब से this is all due to inevitable time, ये सब काल का प्रभाव है, under whose control everyone in every planet is coiled. जिनके प्रभाव से संपूर्ण जगतों में प्रत्येक जीव घूम रहा है, Just as the clouds are coiled by the wind, जिस तरीके से बादल हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लिए जाते हैं. very good verse. Purport, Srila Prabhupada, there is control by time all over the space within the universe. समय का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह है. And there is control by time all over the planets. समय का प्रभाव संपूर्ण सभी जगतों पर है. All the big gigantic planets, including the sun, are being controlled by the force of air. The सूर्य force के of साथ में सारे ग्रह और उपग्रह सभी समय के प्रभाव से घूम रहे हैं. as the clouds are carried by the force of air. जिस प्रकार से बादल
हवा के झोंके के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं, वैसे ही ये सारे ग्रह उपग्रह हवा के झोंके के कारण काम कर रहे हैं. Similarly, the inevitable kala or time controlled even the action of the air and other elements. उसी प्रकार से काल जो है वो हवा और बाकी सारे प्रकृति के गुणों और तत्वों पर अपना नियंत्रण रखता है. Everything is controlled by kala, सब कुछ काल के द्वारा नियंत्रित है. a forceful representative of the Lord within the material world. काल अर्थात भगवान का सर्वोत्कृष्ट नियंत्रक इस भौतिक जगत में. Thus, Yudhishthira should not be sorry about the inconceivable action of time. इसलिए युधिष्ठिर को काल के प्रभाव से बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए. Everyone has to bear the action and reaction of time as long as one is within the condition of the material world. हर किसी को इस भौतिक जगत के कार्यकलापों और गतिविधि और समय के अधीन रहना होगा जब तक वो इस भौतिक जगत में विद्यमान है. Yudhishthira should not think that he had committed sins in his previous births. युधिष्ठिर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने अपने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए हैं And is now suffering the consequence. और उनके कारण वो आज दुख भोग रहा है. Even the most pious has to suffer the condition of material nature. सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों को भी भौतिक जगत की प्रताड़नाएं सहन करनी ही पड़ती हैं. But a pious man is faithful to the Lord, for he is guided by bona fide Brahmana and Vaishnava. लेकिन एक भक्त के लिए वो ब्राह्मणों और वैष्णवों के द्वारा क्योंकि नियंत्रित है, इसलिए उसका जीवन सुगम होता है. The three guiding principles should be the aim of life. ये तीन मुख्य तत्व जीवन के सार हैं. One should not be disturbed by the tricks of eternal time. व्यक्ति को काल के प्रभाव से व्यथित या दुखी नहीं होना चाहिए. Even the great controller of the universe, Brahmaji, is also under the control of time. प्रकृति के सृजक ब्रह्मा जी भी समय के अधीन हैं. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time despite being a true followers of religious principle. इसलिए एक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आचरण भी कर रहा हो तो भी काल के प्रभाव से उसके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उससे उसे दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए. Very interesting verses. बहुत ही सुंदर और विचार करने योग्य श्लोक हैं ये सब. As Bhishmadev is explaining the formidable influence of Kala. यहाँ पर भीष्मदेव समय के प्रभाव को वर्णित कर रहे हैं. It is what we call providence. जिसे हम भाग्य के रूप में जानते हैं सामान्यतः. Many times in Bhagavatam you see this word providence. बहुत बार हम देखते हैं ये शब्द भाग्य उपयोग किया जाता है. What means providence? भाग्य क्या है? Why we don't say God? हम By influence of God. No, we say by the influence of providence. हम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भगवान के कारण नहीं, भाग्य के कारण हो रहा है. ऐसा क्यों? So what is providence? क्यों? तो भाग्य क्या है? Providence means kala. भाग्य अर्थात समय का प्रभाव. Kala, time. समय. It is one very powerful influence of the Lord in this material world. ये भगवान का सबसे प्रभावशाली तत्व है इस भौतिक जगत में. So we should not think sometimes that, oh, because I have done so many imperfect activity, sins, and now I'm suffering. इसलिए व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, गलत कार्य किए हैं, इसलिए अब मैं दुख भोग रहा हूँ.
it may happen because you have done something wrong that you get the result immediately. हो सकता है कि आपने कुछ गलत कार्य किया हो और उसके कारण आपको तुरंत ही दुख भोगने पड़ रहे हैं. But just like it is said here, someone can be very pious man, no sin, still problem will come. लेकिन फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा गुणी है और सत्वगुण में है, दुख नहीं है, पाप नहीं करता, फिर भी उसके अधीन दुख आ रहे हैं, उसको दुख हो रहे हैं. So it is important to understand this, that anyway problem will come in this world. तो इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस भौतिक जगत में कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी. जन्मा मृत्यु जरा व्याधि. जन्म मृत्यु जरा व्याधि. जरा कोविड. जरा अर्थात कोविड. So you don't want COVID, but COVID is coming. कोविड नहीं चाहिए, फिर भी कोविड आ रहा है. Not even need to knock at the door. आपको किसी के दरवाजे खटखटाने की It's जरूरत coming. नहीं. कोविड अपने आप आ रहा है. So problem is like this in this world. Abrahma bhuvana loka punana vartinojuna. From the highest to down. Problem. सबसे ऊपर से लेके ब्रह्मा जी के लोक से लेके सबसे नीचे तक हर जगह कठिनाइयां हैं. So time is a very powerful energy of Krishna. समय जो है भगवान का अति बलशाली, भगवान की अति बलशाली शक्ति. Then I read the next verse because it is following. इसका अगला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो उसके आगे ही है. So Bhishmadevi say, how wonderful is the influence of inevitable time. भीष्मदेव कह रहे हैं, अरे प्रकाल का प्रभाव देखिए कितना अद्भुत है. It is irreversible. ये पीछे नहीं किया जा सकता. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthira? नहीं तो युधिष्ठिर महाराज के रहते हुए गड़बड़ी कैसे हो सकती है? Bhima, Arjuna, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandava. यहाँ भीम है, अर्जुन है और सबसे बड़े तो भगवान हैं जो पांडवों के हितैषी हैं. So he's telling, even Krishna is here, still time is there also. तो वो कह रहे हैं, अरे कृष्ण होंगे लेकिन समय भी है. Sometimes we can say sometimes Krishna is under time. हम तो ऐसे सोच सकते हैं कि कृष्ण भी समय के अधीन Because रह जाते हैं. he stay for how long Krishna stay on this planet? कितने साल तक भगवान कृष्ण यहाँ पर थे भौतिक जगत में? कितने समय तक उनकी जीवन कितना था इस भौतिक जगत में? आयु कितनी थी, कब तक थे, कितने साल के होने तक कृष्ण यहाँ पे थे? 125 years. So 125 and then shallow back sometime somewhere, you know. So we can say, oh, maybe Krishna is under influence of time. तो कृष्ण आए 125 वर्ष रहे चले गए तो हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण तो काल के अधीन है. But no. ऐसा नहीं. He's telling in Bhagavad Gita, I am time. वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है. भगवद गीता में वो कहते हैं मैं ही काल हूँ. But time is playing like this. Time is playing with Maya, you know. And some karma is there, of course. Karma of the living being, individual karma, global karma, then time, then Maya, and everything is mixed like this, you know. That's why it is said it is like a banyan tree. Very complicated to understand. तो प्रभु जी कहते हैं कि यहाँ पर काल है, समय है, प्रकृति के गुण है, जीव के कर्म है, वो सब एक साथ मिलकर के अपने अपने प्रभाव डाल रहे हैं. इसका एक उपयोग, इसकी एक उपमा भगवद गीता में उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से दी गई है. इसलिए इसे समझना बहुत कठिन है.
You cannot understand where the banyan tree has begun and where it ends. There is one here next, a big Shiva temple on the forest pass. And you cannot understand what is the first, what is the last. You cannot understand. This material world, same. You cannot understand what's going on. तो पीछे एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे एक बरगद का वृक्ष है, वो आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है. ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता. So how to deal with this? तो इससे कैसे बर्ताव करें? Matras pasastu kanteya sitoshna sukhadu kada agama paino nityas tam titiksas babharataha. Krishna is telling very simply, just like heat, cold, and so many dualities are coming in this material world, we should be dhira. तो भगवान कह रहे हैं जैसे कि गर्मी सर्दी ये सब होता रहेगा इस भौतिक जगत में, हमें धीर बनना चाहिए. We cannot be wise if you are not dhira. अगर हम धीर नहीं हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं. Dhira means you are not disturbed by guna, time, persons, environment. धीर अर्थात आप किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण, काल के कारण, इन सब से आप व्यथित नहीं होते. You are fixed in your duties, in your bhakti. आप अपने कर्तव्य से और अपनी भक्ति से पूरी तरह एकाग्र, भक्ति और कर्तव्य में एकाग्र रहते हैं. We are doing bhakti anyway. Whatever can happen, still we are practicing bhakti. तो जो कुछ भी आए जीवन में हम भक्ति कर रहे हैं. Even in some days it is difficult, then next day you start again. कुछ दिन निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल जाएंगे, लेकिन फिर से मुश्किलें कम होने के बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं. So Prabhupada said here, one should not be disturbed by the trick of eternal time. प्रभा जी यहाँ कहते हैं कि समय की जो गतिविधियां हैं उनसे हमें व्यथित नहीं होना चाहिए, समय की चाटुकारी से. So many trouble are here. इस भौतिक जगत में तो दुख ही दुख है. So just like the gopis, जैसे गोपियां हैं, so we can say, oh, they are such pure, fantastic, extraordinary devotees. हम देखते हैं गोपियां, हम कहते हैं अरे सबसे उत्तम श्रेणी के भक्त हैं. But for 112, 13 years, they had to be alone and separate and feeling separation from Krishna. लेकिन 112, 113 साल तक उन्हें भगवान का वियोग सहन करना पड़ा इस भौतिक जगत में. Great example of someone who is still after Krishna, even after so long of not having darshan. ये एक उत्तम उदाहरण है उत्तम भक्तों का, कि उत्तम भक्तों को, सबसे उच्च श्रेणी के भक्तों को भी कितने लंबे समय तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता. Actually, they was ready to die at any moment. वो तो अपना शरीर त्यागने के लिए कभी भी तैयार थे. But one thing was there in their mind. लेकिन उनके मन में एक चीज चल रही थी. What it was? क्या चल रही थी? It was that Krishna said, oh, I will come back. क्या चल रहा था? अरे भगवान ने कहा था मैं तुरंत वापस आऊंगा. 2-3 days, I finish demons, come back. 2-3 दिन में सब राक्षसों को मार के आ जाऊंगा. So because of this cheating word of Krishna, they maintain their lives. जैसे भगवान ने उनको ठगा, इसलिए वो अपने शरीर को संभाले हुए थे. They did not wanted to die because they say if Krishna come back and he will see all of us die, then it will be very, very sad. We don't want to make him sad, so let us keep alive. वो सोच रहे थे अगर कृष्ण वापस आएंगे और वो हम सबको मृत देखेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा. हमें उनको कोई दुख नहीं देना है, इसलिए हम अपने जीवन को बरकरार रखेंगे ताकि कृष्ण को दुख न हो जब वो यहाँ पर आए. So what better example is there that even under very troublesome
situation, still we keep on Krishna consciousness. तो इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी हम अपनी भक्ति को अच्छे से सुदृढ़ बरकरार रखें. We read that Krishna, when he was in Dwarka, he sent Uddhav to the gopis to give some message. हम भागवत में देखते हैं कि कृष्ण ने द्वारका से उद्धव जी को भेजा, गोपियों को एक संदेश लेकर के. And when Uddhav was the prime ministers and great grand bhakta. उद्धव जो है वो द्वारका के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही महान वरिष्ठ भक्त हैं. Krishna says of Uddhava, he say, no one is as dear as me as Uddhav. कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे उद्धव से ज्यादा प्रिय और कोई व्यक्तित्व नहीं है. Not even mother, father, or queens, Lakshmi, no one is dear as Uddhav. मेरे माँ पिता, लक्ष्मी, मेरी रानियां, कोई भी उद्धव के समान मुझे प्रिय नहीं है. So please Uddhav, go give some letters, some message to the gopis, to the inhabitant of Vrindavan. तो हे उद्धव, कृपया वृंदावन जाइए और वहाँ पे गोपियों को मेरा एक संदेश दीजिए. So he came and he saw the situation, the horrible situation of the situation of separation of the inhabitants of Vrindavan. तो उद्धव जब वृंदावन आए तो वृंदावन के व्रजवासियों की अतीव दयनीय अवस्था जो भगवान के विरह में थी उसे देखा. Mother Yashoda Nanda Maharaj was devastated. She was not cooking anymore. There was a spider web all over the kitchen. नंद महाराज यशोदा मैया अत्यंत दुख में थे. कुछ भोजन नहीं बन रहा था. पाकशाला में हर जगह पे मकड़ी के जाले बने हुए थे. The Gopa also was like devastated, burning here and there, here, but not really being alive. गोपगण भी पूरी तरह से हृदय विदीर्ण अवस्था में थे. हर जगह पे घूम रहे थे लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि अरे कोई चैतन्य व्यक्ति घूम रहा हो. And gopis are most devastated, nothing happened, almost dying. गोपियों की अवस्था तो प्रायः मृतप्राय थी. And he saw Radharani. Radharani was almost died. Sometimes no hair was coming out of his nostril. और राधा रानी तो ऐसी अवस्था में थी कि कुछ समय तक उनकी नाक से श्वास भी नहीं होता था. So Uddhava was thinking, I'm great devotees. I am, Krishna is loving me so much. उद्धव सोच रहे थे मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, मुझसे भगवान इतना प्रेम करते हैं. But when he saw the situation, the love of the inhabitants of Vrindavan, he was struck with wonder. लेकिन जब उन्होंने व्रजवासियों के कृष्ण प्रेम को देखा तो उनका हृदय उनको अद्भुत लगा. So, okay, long story. But the point is that in such acute separation, the gopi was still 100% thinking of Krishna, even after 100 years. ऐसी विकट परिस्थिति में भी 100 वर्षों के बाद भी गोपियां केवल कृष्ण चिंतन में मग्न हैं. So we should be like this, always thinking of Krishna and never forget him. This is the goal. इसलिए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए. हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए. ये जीवन का लक्ष्य है. So we have to concentrate on bhakti. We have to mind what we are doing now. We have to think about what I am doing. What is my goal? तो हमें अपने चित्त को एकाग्र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. What is your goal? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? What is your goal? कृष्ण भक्ति. ठीक है.
Krishna Bhakti, not Krishna, but Krishna Bhakti. Or I will add Radha Krishna Bhakti. मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा राधा कृष्ण भक्ति. So we have to think about, first we have a goal, so now we are certain level, but our goal should be to attain what is called Bhav Bhakti. तो हम जिस भी अवस्था में हो अभी हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भाव भक्ति के स्तर को तो कम से कम प्राप्त करें. There is 3 stages of Bhakti: Sadhan Bhakti, Bhav Bhakti, Prem Bhakti. भक्ति के 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति. So now we're on Sadhan Bhakti, we're doing nice. But our goal should be, we have to attain this Bhav Bhakti. Bhav Bhakti means very much devotion and sentiment for Krishna. तो हम अभी कर रहे हैं साधन भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छा है लेकिन जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भाव भक्ति जहाँ पर हृदय से उत्स्फुरित भाव आते हैं भगवान के प्रति वो भक्ति अनिवार्य है. So we should have a goal. इसलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए. Just like a bowman, if he has arrow and bow, he should have a hem. You know what is the use to have this? तो जैसे एक व्यक्ति तीर कमान लेकर के वो मारता है तो उसे एक लक्ष्य होता है तो बिना लक्ष्य के तीर कमान लेकर के चलने में क्या मजा है. So we should have this aim of Bhav Bhakti and practice of Sadhana Bhakti with this aim. तो हमें भाव भक्ति का लक्ष्य साधना भक्ति से भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करना है ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए. So we should really understand what we are doing now. तो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदा हमेशा याद रखें सोचिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ. We should not do something neglectfully. हमें कुछ बिना हिसाब किताब के नहीं करना चाहिए. सोचे समझे. For if we put the tilak, it should be nicely done. अगर तिलक लगाते हैं तो भी वो सुंदर हो. Then we should wear some neck beads, हमें कंठी माला पहननी चाहिए. tulasi, only tulasi, Why we have 3 normally? तीन तुलसी के राउंड्स क्यों हैं? Why? क्यों? Why do you have 3, not 2? Normally, it is like this. 3 क्यों हैं? 2 क्यों नहीं है? So 3 means what? 3 क्यों? Ubu. 3 means what? 3 है. 3 means he is an initiated disciple. Yes, but what it means? Why 3? वो ठीक है लेकिन 3 ही क्यों? 4 या 2 क्यों नहीं? Why 3? Guru gives 3, that's why 3. When we accept the Guru. Yes. But why these 3? क्यों ये 3? Why not 4 or 5? 4 नहीं, 5 नहीं, 3 क्यों महत्वपूर्ण है? Huh? We are stuck in the 3 modes of material nature. No. नहीं. So 3 means we are serving Guru, Vaishnava, Krishna by mind, by words and by body. तो 3 का अर्थ है काया, वाचा और मनस. इन तीनों से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं. 3 ways to serve the Lord. तो 3 स्तर हैं, 3 अलग-अलग. Our body is serving, sweeping the floor. हमारा शरीर सेवा कर रहा है, हम मंदिर मार्जन कर रहे हैं. Then words by chanting and glorifying Krishna. हमारे शब्द हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का बखान कर रहे हैं. And then the mind should sing of Krishna, remember Krishna, remember the form, the activities of Krishna. तो मन है जिसमें भगवान की छवि को याद करें, वैष्णवों की सेवा को याद करें, भगवान के रूप को याद करें.
That means the three things. It may be something else, but this is a main why we have three like this. तो तीन क्यों? इसका पीछे ये कारण है. So this is three, we can say three things separate, no? तो हम कह सकते हैं तीन ये तो अलग चीजें हैं ना. So normally you should have three strands. तो फिर तीन अलग अलग होने चाहिए, एक, दो और तीन. Because if you do one with three, it is not the same. तो आप एक ही लंबा लेकर के तीन क्यों डाल रहे हैं? एक I know it is done like this, but normally three strands of and no like this. It should be like this, finished. तो एक एक माला गुथी हो, खत्म. Oh, this is small details. It will not change our life. But so many details like this, we don't know. ऐसे छोटी छोटी जो विविधताएं हैं, बारीकियां हैं, जो हमें पता नहीं है. But bhakti start by understanding what I am doing. भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा जागरूक रह करके कि मैं इस समय कर क्या रहा हूँ. Someone has beads with him, or बीट्स किसी की जपमाला. show me one beads here. एक जपमाला दीजिए. Okay, very good example. So, Hare Krishna. So, for example, we are doing rounds and we do like this. So, what is the name of this? तो हम माला करते हैं, एक एक मणि नीचे उतारते हैं, इसका नाम क्या है? काउंटर. This is English. Don't laugh, very serious. So what is the name of this? इसका क्या नाम है? Sanskrit name. साक्षी माला. Good! Oh. Sakshi Mala. What means Sakshi? Sakshi means look. Just like Krishna is looking after you. So this is Sakshi Mala. Means is witnessing what you are doing. तो इसे कहते हैं साक्षी माला. साक्षी अर्थात भगवान देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं. Okay, one point. So Sakshi Mala. So who can really witness this Sakshi Mala? I'll tell you some things after you do whatever you want. But this Sakshi Mala should be in Tulasi. तो ये जो साक्षी माला है वो तुलसी की होनी चाहिए. Because Tulasi is witnessing your bhakti. क्योंकि तुलसी देवी आपके भक्ति को देख रही है. Plastic nahi. प्लास्टिक नहीं होना चाहिए. You see? This is another details. Your Sakshi Mala should be in Tulasi, and she's witnessing how many rounds you are chanting. तो साक्षी माला तुलसी की हो और तुलसी महारानी देख रही है आप कितना जप कर रहे हैं और कितनी तन्मयता से कर रहे हैं. It is okay, but to have Tulasi, it's better. तुलसी लेना बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. Ah. Okay. So this is what, to make the point that we should always understand what we are doing. Why we are dressing like this, in dhoti. And हमेशा भान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं धोती और कुर्ता क्यों पहनता हूँ. why we should wear dhoti? धोती क्यों पहननी चाहिए. In the West, there is one movement called Krishna West. पाश्चात्य देशों में कोई एक मूवमेंट है जिसे कहते हैं. Some movement is there and it is called Krishna West. In this movement, kind of separate entities that say that we should not care about Indian
style of life, food. We should do our own things around Krishna, but in a Western way. No need to wear dhoti. Wear like Western. तो ये कृष्णा वेस्ट वाले लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमको सब कुछ भारतीय परंपरा के अनुसार करने की जरूरत नहीं है। खाना पीना पोशाक रहन सहन भारतीय क्यों चाहिए? हम पाश्चात्य हैं, पाश्चात्य की तरह रहेंगे और साथ में कृष्ण भक्ति भी करेंगे। So it is one kind of opinion. तो ये एक मत है। Okay, it may be applicable in some situation. कुछ परिस्थितियों में ये लागू किया भी जा सकता है। So Prabhupada accepted that in the West, devotees sometimes distributes in Western clothes. प्रभुपाद जी ने इसकी अनुमति दी थी कि पाश्चात्य देशों में भक्त कभी-कभी पाश्चात्य पहनावे में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। In airport or different difficult things like this, Prabhupada accepted devotee wear dhotis, wear pants. तो एयरपोर्ट ऐसी कुछ मुख्य जगहों पर प्रभुपाद जी ने मान्यता दी थी कि भक्त पुस्तक वितरण करते समय पैंट्स वगैरह पहन सकते हैं। But we are keeping dhotis, you know. हम धोती पहनते हैं। Why? क्यों? क्योंकि वो सिलाई नहीं रहती, वो It has no stitch. comfort. Good. This is one point, okay. सही है, बढ़िया है। But we are wearing dhotis because Krishna is wearing dhotis. कृष्ण धोती पहनते हैं। No? Did you see Krishna in pants? Oh, sometimes in Dwarka after, but we are not interested in Dwarka. Krishna in Vrindavan is always in dhoti, you know. कृष्ण जो है वो वृंदावन में हमेशा धोती पहनते हैं। And Chada, we call him Pitambar, no? वो चादर पहन धोती पहनते हैं और चादर उत्तरी पहनते हैं। Pitambar or धोती Chada, को पीतांबर पहनते हैं। yellow, beautiful yellow dhoti. येलो पीले रंग की धोती। So we are following Krishna, we are not following Western style. तो हम कृष्ण को फॉलो करते हैं, पाश्चात्य देश की संस्कृति को फॉलो But करते हैं। it is okay if we have to work, if we have factory, offices like this, it is okay to change and put pants. But how lacking is with dhoti? तो हम कहीं फैक्ट्री में ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो पैंट्स वगैरह ठीक है, लेकिन हम धोती से ज्यादा प्रेम करते हैं। And we are wearing shika, और हम शिखा रखते हैं। chota shika, a big shika. बड़ा शिखा। So we are wearing shika. Why are we wearing shika, for शिखा example? क्यों रखते हैं? प्रतीक, Huh? ये प्रतीक आहे ते इथं म्हणजे भक्त ते घेऊन भगवान एक ही पुरुष है, हम लोग कृष्ण ने It is a way to convey to Krishna that Krishna is the enjoyer and I am Prakriti, I am to be enjoyed, स्त्री। Okay, this can be one explanation. Hmm? When disciple makes some wrongdoing, then Guru can take Shikha and pull. Or sometimes I hear also that at the end Krishna is taking the devotee by here. But, you know, different explanation I hear, but it is mainly because this body is like the temple. You know, मुख्य कारण क्या है? कई सारे कारण दिए जाते हैं। मंदिर। मुख्य कारण है ये This. शरीर जो है मंदिर है। And this is like the flag on the top of the mandir. और शिखा जो है वो इस मंदिर के ऊपर की ध्वजा है। Like Jagannath Puri, have you seen? Big flag. जगन्नाथ पुरी आप देखते हैं बहुत बड़ी ध्वजा होती है। So normally it is like a flag of our body like mandir. तो ये जो है शिखा ये हमारे शरीर का ध्वज है। We are not like Buddhist Mayavadi who
shaped up, you know. हम No बुद्धिस्ट या mandir. बुद्धिस्ट या मायावादियों की तरह नहीं है कि सब कुछ उड़ा दिया, अरे ये मंदिर नहीं है. So we are following, you know, our body should be a mandir. We are wearing tilak also for this reason that our temple is like a mandir, and we put this Vishnu tilak. तो हम जानते हैं और समझते हैं कि हमारा शरीर मंदिर है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं. So, like this, it is to understand that in front of any situation, any problem, still we are following the path of Krishna Bhakti. तो ये इसलिए है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी समय में भी, किसी भी गतिविधि में भी हम कृष्ण और भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं. So Prabhupada, he was giving the basis of our Krishna consciousness, you know. He implemented the basis of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने हमारे कृष्ण भावना में जीवन की एक नींव रखी. He used to travel all over the world, उन्होंने पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया. each time staying 1 week in temple. लगभग एक हफ्ते तक एक मंदिर में रहते थे. So the profound understanding of philosophy he taught. तो भक्ति के तत्व ज्ञान की मूलभूत भारी भक्कम शिक्षा जो है वो उन्होंने दी. He had maybe no time to explain this small detail, as I say. Maybe. उन्हें बहुत बारीकियां समझाने का समय नहीं मिला, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे. Just like in Paris, this picture was taken in Paris in 74 or 75, this one. ये जो प्रभुपाद जी की पिक्चर है, ये पेरिस में 1974 या 75 में खींची गई है. So he was coming to, you know, giving strength to his movement. तो प्रभुपाद जी हर जगह भ्रमण कर रहे थे ताकि अपने इस आंदोलन को सशक्त बना सके. By the presence of pure devotee, everything becomes very strengthful. एक शुद्ध भक्त की उपस्थिति से सब कुछ बहुत शक्तिशाली हो जाता है. Special power is there. प्रमुख शक्ति होती है. So that is how we was understanding Prabhupada, by his extraordinary power, influence. ऐसे हम प्रभुपाद जी को समझ सकते हैं, उनके महान योगदान और उनके महान प्रभाव को जानकर. And also his extraordinary compassion. और उनकी महान करुणा को देख करके. Because he has to start point zero in America. क्योंकि पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में उन्होंने केवल शून्य से सब कुछ शुरुआत की. Shunya, yes. Zero was there, you know. He had to teach from, you know, basis, you know, to top. तो कुछ नहीं था, शून्य था केवल, और वहां से शुरुआत करनी पड़ी उन्हें, सब कुछ सिखाना पड़ा. And he built a house where everyone can live, as he says. और उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जहाँ हर कोई रह सके, ये उन्होंने खुद ही कहा है. And he said, now this house you decorate it. अब उन्होंने कहा कि इस घर को अच्छे से सजाइए आप सभी. So decorate means to understand all the small detail of what we are doing. तो घर को सजाना अर्थात सारी बारीकियों को समझना कि आप क्या कर रहे हो. And decorate means also we have even to increase our bhakti. और सजाना अर्थात हमें अपनी भक्ति को और सुदृढ़ बनाना है, बढ़ाना है. Pure bhakti is not, you know, still bhakti, not moving, not going up. Pure bhakti means you have to rise. शुद्ध भक्ति कभी भी संथ नहीं रहती, एक ही स्तर पर कायम नहीं रहती, वो हमेशा बढ़ती रहती है. When Prabhupada came, we was all new devotee called Kanishta. Huh? जब प्रभुपाद आए तो हम सभी नवसिखिए भक्त थे, कनिष्ठ भक्त थे. But after years,
of practice, we should not stay on this normally we should not stay on this Kanishta platform. We should rise at least Madhyam platform. काफी समय तक रहने के बाद हमें कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए, कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर तक तो आना चाहिए. We cannot stay on the same level. This is not bhakti. Bhakti means always something ecstatic. तो एक ही जगह पर एक ही स्तर पर रहे वो भक्ति नहीं है. भक्ति अर्थात हमेशा बढ़ती हुई. We should advance in Krishna consciousness. That is most pleasing to the spiritual master. हमें भक्ति में हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए. इससे ज्यादा खुशी हम अपने गुरु को कभी नहीं दे सकते. So advance means increase. प्रगतिशील अर्थात बढ़ावा, बढ़ोतरी. Just like we are chanting at the beginning 16, but is that means we should stay like this whole life? तो हम जैसे शुरू में 16 माला करते हैं, इसका मतलब जीवन भर केवल 16 माला ही करेंगे क्या? So what will give us the impetus to chant more? तो हमें ज्यादा माला करने के लिए क्या प्रभाव देगा, असरदार होगा? Where will come the impetus to chant more? तो क्या करने से हमें ज्यादा माला करने के लिए स्फूर्ति मिलेगी? By ruchi. रुचि, उसमें टेस्ट आए. Taste. So if we have some ruchi for Harinam, then naturally we want to chant more. तो अगर हरिनाम में रुचि आए तभी तो हम ज्यादा माला करने के लिए उत्स्फूर्त होंगे. Prabhupada always said 16 rounds minimum. प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा 16 माला कम से कम. Never maximum. कभी नहीं बोले 16 माला से ज्यादा नहीं करना. Always minimum. हमेशा कम से कम. Minimum means minimum. That means, oh, maybe I should increase. I should try to please Krishna by chanting more name. Is it not natural? तो मिनिमम अर्थात कम से कम. तो अगर मैं भगवान को ज्यादा प्रसन्न करना चाहता हूँ तो मैं ज्यादा नाम जप नहीं करूँगा क्या? क्या ये स्वाभाविक नहीं है? So naturally, after some time, we want to chant more and increase the number of nam. तो स्वाभाविक रूप से थोड़े समय के बाद में हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपनी मालाओं को बढ़ाऊं और नाम जप बढ़ाऊं. Best example is Haridas Thakur, but that we cannot. सबसे उत्तम उदाहरण है श्री हरिदास ठाकुर जी का, लेकिन हम उसे इमिटेट नहीं कर सकते. Oh, we cannot. Maybe we will be able, but very difficult. But still, to increase 24, 32, 40, 64, why not? In this life, we should try to attain this. तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं 24, 30, 24, 32, 40, 64. इसके लिए तो प्रयास कर ही सकते हैं. And this ruchi, this taste for practicing Krishna consciousness will come on all levels. We will like to hear more about Srimad Bhagavatam or other grantha. तो ये जो टेस्ट है, ये जो स्वाद है भक्ति का, ये हम भक्ति के हर महीने में देखेंगे. हमें ज्यादा पढ़ना अच्छा लगेगा, भागवत सुनना अच्छा लगेगा. So I'm asking a question now. You be honest. Who is reading Bhagavatam every day? आप में से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सही सही उत्तर दीजिए. कौन रोज भागवत पढ़ता है? Two. 2 लोग हैं बस. So who is wrong, who is right? कौन सही है, कौन गलत है? Nityam Bhagavata नित्यम भागवत सेवाएं means इसका मतलब क्या है? every day. Nityam means every day. Anudinam. नित्यम अर्थात रोज, अनुदिनम. So every day Srimad Bhagavatam should be read. हर दिन भागवत का पठन होना चाहिए. Maybe not 1 hour, maybe only 1 verse, 2 verse, only. 1 घंटा न हो, 1 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए. You take Bhagavatam and every day you read, you know.
आप भागवतम लीजिए, हर दिन पढ़िए 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 पढ़िए। I'm doing this every morning since 40 years. मैं रोज ये पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। Any place I am, कहाँ भी हूँ, no, because of technology, everything is on a small, iPhone. Thank you. टेक्नोलॉजी के कारण सब कुछ एक आईपैड में है। Yeah, so all Prabhupada books are there on you like this. Not need to carry big books, not possible. तो बड़ी बड़ी पुस्तकों को हर जगह पे लेके जाने की भी जरूरत नहीं So है। every morning when I offer Thakur foodstuff, when he is eating, then I'm reading to him Srimad Bhagavatam. He like to hear. तो मैं जब अपने ठाकुर को भोग लगाता हूँ तो उस समय उन्हें भागवत सुनाता हूँ, उन्हें सुनना Maybe बहुत 10 अच्छा minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes लगता है। 10 maximum. मिनट हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, But then Nityam Bhagavate Sevaya is accomplished. लेकिन नित्यम भागवत सेवया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So to not do it, it's a wrong thing. तो न करना ये बहुत ही गलत है। Depend on how long we walk, etc. Still, during the day, we should have 5 minutes to read one verse at least of Srimad Bhagavatam. हम काम कर रहे होंगे, हम बिजी होंगे, वो सब सही है, लेकिन दिन में 5 मिनट तो होने चाहिए हमें भागवत का एक श्लोक पढ़ने के। Because it is the means of conquest, it is said. क्योंकि ये युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshtiki. Neshtiki means fixed. नैष्ठिकी अर्थात फिक्स्ड। By hearing Bhagavatam every day, and our bhakti becomes firmly fixed. नियमित रूप से भागवत का पठन श्रवण करेंगे तो भक्ति पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएगी। It is not said like this, it is not a verse like this. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. तो यहाँ पर चंचलत्व का उपयोग नहीं किया गया है, भक्ति चंचल नहीं होती। नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भगति नैष्ठिकी। So, every day of our life we are chanting, every day Bhagavatam, every day, if possible, Sadhu Sangha, every day we are thinking about Vrindavan, and every day we are worshipping Thakur. हर दिन हम नाम जप करते हैं, हर दिन भागवत पढ़ते हैं, हर दिन साधुओं का संग करते हैं, हम हर दिन भगवान की उपासना करते हैं। Karta hai, understand? Karta hai. करते हैं। Ah! हाँ। So, it's everyday practice, not like some other religion only once a week, Sunday morning. They come, they meet, and then, we want every day, it's an everyday business, Krishna consciousness. तो कुछ अन्य धर्मों की तरह नहीं कि हफ्ते में एक बार संडे मिलो, थोड़ा आ जाओ। हमारा ये रोज का काम है। कृष्ण भक्ति ये रोज का काम है। Never Prabhupada say, once a week you meet together, you chant and bas. कभी प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि आप हफ्ते में एक बार मिलिए, थोड़ा जप कीजिए, एक साथ मिलिए, हफ्ते में एक बार बहुत हो गया। Everyday practice. रोज की गतिविधि है। Are you not eating every day? आप रोज खाना नहीं खाते क्या? Are you not every day? आप रोज सांस नहीं लेते क्या? Are you not drinking every day? आप रोज पानी नहीं पीते क्या? He's drinking every 10 minutes. So, if we are doing all these things every day, we should chant, hear, read Bhagavatam every day of our ये life. सारी चीजें हम रोज कर रहे हैं, तो भागवतम में हमें रोज पढ़ना चाहिए। So we are very thankful for Krishna to given us food and, breath, तो हम Imagine Krishna cut the, and no more. Oh, just like I read now, I am in the story of Dhruva, and he was so meditating strongly, fixing, and blocking all the
all the airs in his body and blocking all the, hole, then the whole universe becomes suffocated. तो मैं अभी भागवतम की पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा, जहाँ पर वो अपने चेतना को भगवान के ऊपर पूरी तरह से संग्रहित किए और अपने सारे शरीर की गतिविधियों को शिथिल कर दिए, अपने सारे नवरंध्रों को बंद कर दिया, हवा का आवागमन भी बंद हो गया, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में हवा चलनी बंद हो गई. So all the demigods, they went to see Krishna, Vishnu, something happened, we don't understand what's happened. तो सारे देवतागण विष्णु के पास गए, खांसते खांसते बोले कुछ तो हो गया, हमें पता नहीं चल रहा है. Krishna, camera everywhere. कृष्ण, उनका कैमरा है हर जगह पे लगा हुआ. ITVC. So he understood what happened. He said, "Don't worry, one small boy is doing very strict. I'm going to see him. Don't worry, I will arrange." तो इन्होंने ITV से देखा, ITV मतलब डिस्काउंट टीवी, उन्होंने ITV से देखा कि एक छोटा सा बालक बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा है, मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा. So my point was that if you cannot, for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, finished. आप सांस नहीं लेंगे 1, 2, 3 मिनट खत्म. So we should be thankful to Krishna that some hair is there, And even what is wonderful, even while you are deep sleep, if you want someone deep sleep, you come to see Prabhu, he knows very well. कितनी अद्भुत बात है, देखिए आप पूरे अच्छे से गाढ़ निद्रा में हैं, तो किसी को गाढ़ निद्रा देखनी है तो So even if you can do any song, I think not moving. आप कुछ भी कीजिए, उनके आजू बाजू में आकर के हिलते डुलते ही नहीं है. He attained perfection. Nidra yoga. निद्रा योग में उन्होंने महारत हासिल कर लिया. So, even when you are deep sleep, 3 stages of life: awake and dreaming and deep sleep. 3 stages, not 4, 3. 3 स्तर हैं. आप जागृत हैं, आप स्वप्नावस्था में हैं और सुषुप्ति में हैं. 3 स्तर हैं. So when you are in deep sleep, nothing, no senses, no intelligence, no mind, nothing is working. तो जब आप पूरी तरह सुषुप्ति में हैं, तो आपके मन, बुद्धि, इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रहे. Except prana. प्राण को छोड़ कर. प्राण तब भी काम. Prana means, then otherwise you will, you will be in great anxiety because you say, as soon as I will fall asleep, I will not be able to, तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा अगर आप सोचेंगे अरे मैं सो गया और सांस लेना बंद कर दिया तो. But no, it's working very nicely, And even when you deep sleep and nothing is awake, still nicely it's done. So thank you, Krishna. तो आप सुषुप्ति में हैं लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कृष्ण को कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए. So pranam is not something ordinary. It is coming from Brahman. प्राण ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये ब्रह्म से आता It is written in Vedanta Sutra. है. वेदांत सूत्र में लिखते हैं. It is not ordinary. This not ordinary hair. And 10 are here in the body. 10 nadis. प्राण और 10 शक्तियां शरीर में कार्य कर रही हैं, ये साधारण चीजें नहीं हैं. Controlling the body. और शरीर को नियंत्रित करती हैं. So, like this, my point was that Krishna is giving, food, drink. So, now I should do also every day. The example, my point is that every day Krishna is providing this. He is very kind, to all living entities.
Every living entity has some food, drink, and so Krishna is very kind to living entities. And it works every day. So my point was, every day also we should worship Krishna by chanting, by reading Srimad Bhagavatam, and associating with devotee as much as we can. तो हम देखते हैं सारी चीजें नित्य नियमित हो रही हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, हम सभी को अन्न, जल, सांस लेने के लिए हवा नियमित रूप से चल रहा है। तो अगर वो नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं तो हमारा कितना भारी उत्तरदायित्व है कि हम भी नित्य नियमित रूप से उनकी भक्ति करें और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। Drink a little. Drink a little. I don't want you to stop. So Krishna is very merciful. He is giving all these things free of charge. And the sun, sun free. I don't know for how long, but now it's free. So Krishna is giving all this. So certainly, and he does not ask us for some things, say, can I breathe? No, he's doing it nicely, freely. He's very kind. So we should, be grateful to Krishna and say, oh, my dear Lord, certainly I should chant your name, hear your glories every day. तो भगवान हमें अन्न, जल, हवा, सूर्य दे रहे हैं। मुझे पता नहीं कब तक सूर्य भी फ्री हमें मिलेगा, लेकिन जब तक है सब कुछ भगवान हमें फ्री में दे रहे हैं, तो क्या इसलिए हमें भी नियमित रूप से भक्ति नहीं करनी चाहिए? भगवान आप नित्य नियमित रूप से मेरा पालन कर रहे हैं, मैं भी नित्य नियमित रूप से आपकी भक्ति करूंगा। Even one verse of Bhagavatam. एक श्लोक तो पढ़िए। So who will not do it? कौन नहीं करेगा? You can do. Anyone cannot do one verse? कोई है जो यहाँ एक श्लोक Everybody can do it. Of course, I understand that sometimes you read other literatures. निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि आपको Still, Bhagavatam should be there every morning. One verse at least. फिर भी भागवतम का एक श्लोक तो होना चाहिए रोज सुबह। And if you have time, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, etc. और अगर आपके पास समय हो तो भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत। But Bhagavatam Nityam Bhagavata Sevaya. भागवतम नित्यम भागवत। We are serving the Bhagavatam, हम पढ़ करके which is भागवतम की सेवा करते हैं। non-different from Krishna. भागवतम और कृष्ण अभिन्न। And we are serving Prasadam. और हम प्रसाद की सेवा करते हैं। We don't eat, we are serving Prasadam. हम प्रसाद खाते नहीं हैं, हम प्रसाद की सेवा करते By हैं। taking prasad, we will have strength and we will be able to serve Krishna. This is the way of consciousness. I'm serving prasadam. I'm not enjoying prasad. I'm serving prasad. तो प्रसाद लेने के पीछे की चेतना क्या है? मैं प्रसाद का भोग नहीं कर रहा, मैं प्रसाद की सेवा कर रहा हूँ। ये अन्न, ये प्रसाद खा करके मुझे शक्ति मिलेगी जिससे मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं प्रसाद ले रहा हूँ। तो मैं प्रसाद की सेवा करता हूँ, मैं प्रसाद को ग्रहण नहीं करता। So Prabhupada explains us everything from the beginning. So eternally we are also grateful for Prabhupada to have given us all this wonderful path of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बारीकियां हमें समझाई हैं, हम नित्य नियमित रूप से प्रभुपाद जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें कृष्ण भावना की इस प्रगतिशील पथ पर आने के लिए मार्ग दिखाया है। Okay, Srimad Bhagavatam, Grantaraj ki jai. Is there any one question or किसी को कोई something? प्रश्न है, Something not understood? किसी को समझ में नहीं आया हो?